बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स को और वेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी लिखेंगे और इसमें कुछ एमसीक्यूज भी बना लेंगे वेक्टर्स में। तो आपका ये पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। पहला सवाल, दिस इज चैप्टर नंबर 2, वेक्टर्स and equilibrium. Define vectors. Define vectors. Explain it. And give some examples. Give some examples. هذا من سوال ده. परंतु शो definition करू the scalars. The vector was the reo कहीं का ना. देखे दो terms ज़्यादा की. शो terms ज़्यादा की. दो. संग वो define को vectors. Are vector physical quantities. Definition. Those quantities, those physical quantities, those physical quantities which are completely represented by, which are completely specified by three terms. कौन कौन से terms? Number, comma, unit and direction. And direction. सेकंड डिफिनीशन, अगर हम यूनिट और नंबर को कंबाइन कर ले, देन दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. नो दा से हम लिखे शे दोज फिजिकल क्वांटिटीज कंप्लीटली وشو بس ده دلته كده ده كاي يعني طول سمره पेजेस راغلل 300 physical quantities are completely represented by number and unit is called what? शाबाश मेरा अबिद बरत हुए. Number and unit are called scalars, and scalars are magnitudes. Scalar are no number of unit the among a magnitude were you, which are completely specified by magnitude and direction. And direction. Yeah, as well as direction are called vectors. Build definition. वो quantities जिसके पास डायरेक्शन हो, इसके पास क्या हो, या वो क्वांटिटीज जिसके प्रॉपर्टी फिक्स्ड हो. प्रॉपर्टीज क्या हो? फिक्स्ड. दैट्स सिंपली द डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी, द डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटीज. अल तक तासु ख्याल करी नॉन डायरेक्शनल. द डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटीज are called vectors.
explanation. Da basanga explain ko. Da masale yo motor car de. Aw da de motor car speed mangtas da de. Suppose this is 80 kilometer per hour. That is the speed de. What is 80? Mahmood, 80 is number. 80 is number. What is kilometer per hour? This is unit. So this is called magnitude. This is called, and the motion of this car is in a specific direction. These are the direction lines: north, south, west and east. इसका डायरेक्शन कहाँ है? ईस्ट. तो इस मोशन को आपने रिप्रेजेंट की है 3 टर्म्स से. वन इज नंबर, other one is unit, and other one is a direction. So the speed of a car in a specific direction is called velocity. It's called, and velocity is a vector quantity. Velocity is a, now the explanation ulika, if a car moving with a speed of 80 kilometer per hour towards the east, toward the east. So in this example, speed is represented by number and unit, by number and unit. And also a specific direction, east, specific direction, east is used. So speed in a specific direction is called velocity. Thus, speed in a specific direction called velocity, and velocity is a vector quantity. And velocity क्या है? Velocity is a vector quantity. यहां पर भी एक अहम पॉइंट है आपके पास. रहमतुल्लाह तिखोरा तगप्रीदा. स्केलर्स को हम आम मैथमेटिक्स के उसूलों पर जमा भी कर सकते हैं, उसका सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, उसका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, उसका डिवीजन भी पॉसिबल है. यानी स्केलर को हम आम मैथमेटिक्स के उसूलों पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या उसका हम ऑपरेशन कर सकते हैं. लेकिन वेक्टर्स एडिशन, वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में हम आम मैथमेटिक्स यूज नहीं कर सकते. वेक्टर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक खास रूल अप्लाई करते हैं, और वो खास रूल क्या है? वो असल में वेक्टर अलजबरा है. वहां पर स्केलर अलजबरा है और यहां पर क्या है? वेक्टर अलजबरा. तो वहां पर आपने स्टार में ये एक्सप्लेन किया था कि वेक्टर स्केलर्स कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कैन बी मल्टीप्लाई, कैन बी डिवाइड by using a common mathematics, by using
कम, लेकिन यहां पर हम वेक्टर्स को आम मैथमेटिक्स पर ऑपरेट नहीं कर सकते। तो खबर मतलब दादे वेक्टर्स आम मैथमेटिक्स बांधी न जम कीगी, न सब्ट्रैक्ट कीगी और न मल्टीप्लाई कीगी। न कम मैथमेटिक्स पकार दे, वेक्टर मैथमेटिक्स पकार दे। अगर सा टोल चैप्टर दे अगर वेक्टर मैथमेटिक्स दे हेड टू टेल रूल। To add vector, we use head to tail rule. To multiply vectors, we use dot product. We use cross product. To subtract vector, we use again head to tail rule. No, دلته یو اهم پوینټ ولیکا. کوم یو پوینټ ولیک دا بس ویکټرز پرون سکیلرز ولانه نه ویکټرز شو. څنګه یو خبر پکې زیاته شو، کومه خبر پکې زیاته شو؟ define vectors al the define scalars. Explain it, give some examples. Those physical quantities which are completely represented by three terms. One is called number, other one is called unit, and last one is a direction. Yeah, that's implication. Number and unit are called magnitude. Those quantities which are represented by magnitude and direction also called vectors. या दासिम डिफाइन कवले शई कि the directional physical quantities are called what? Vectors. और vectors दामा सरा यो स्पीड दे पर यो स्पेसिफिक डायरेक्शन की देता ज वेलोसिटी वे मा और वेलोसिटी मा स वेक्टर क्वांटिटी दा वेलोसिटी कमा क्वांटिटी दा वेक्टर क्वांटिटी दा नराजुमंगा अहम पॉइंट था दादा यो सो एग्जांपल्स मंग वर्को खजी स्टार दिलता ओका यो अहम पॉइंट उलिका वेक्टर्स can be added, subtracted and multiplied by using vector algebra. आगे की रिजोल्यूशन रजी सब की राजी रिजोल्यूशन पर पार्ट्स के स्प्लिट अप कीगी ना गई तब हम रिजोल्यूशन लफ्ज एक्सप्लेन करूं दिल द डिवीजन खबर निश्ता डिवीजन पर की निश्ता मल्टीप्लाई बाय यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा संगा एग्जांपल्स वर्क इतासो displacement is a vector quantity. Displacement covered in time t is called velocity, having some direction. Velocity covered in time t is called acceleration, having some direction. अगर आपके पास acceleration हो, then there must be some force. If there is force, then there may be torque as well as momentum. As well as momentum. Force may be due to weight. Due to weight. That's the example. These are called the vectors. Displacement, velocity, acceleration, force, torque, momentum and weight. वेक्टर बसंग जाहिर हो हाउ वी प्रेजेंट अ वेक्टर योजे कि वेक्टर शिता और कुनिश्ता दा मंग संग जाहिर हो सरदार हाँ डायरेक्शन एरो निशान symbolic representation or graphic representation. How we represent a vector? Vector may be represented in two ways. दो तरीके हैं. ग्राफ से भी जाहिर कर सकते हैं और सिंबल से भी जाहिर कर सकते हैं. May be used a symbol, may be used a graph. Presentation of vector. Presentation of small topic. Presentation of vector. Presentation
of a vector. There are two types of representation of a vector. दो तरीके दी कम तरीके दी सिंबल ना हम जाहिरी की और दामुली का दारलांदीना में लिख ले महमूद उली का हाँ दा दो मेथड्स उली का साजिद संगा बेसोर देनन साजिद संगा बेसोर दे दो तरीके दी फर्स्ट वन symbolical representation. Symbolical representation. अब यो दिया मंग सरा graphical representation. Graphical representation. Symbolically, vector represented by two ways. पति के दन नजान ले दो तरीके दी. ख्वाहियो method से कम दे आगा पर physics book की निश्ता. अब आगायो पर की use कीगी. Symbolically, vector is represented by two ways. One is a bold face letter, and other one is common letters with arrow draw a bow on it. संगा symbolically यो दा तरीका दा symbolically a vector is presented by a bold letter या bold face letter. कुछ तास तो दासी पर किताब की मिलाऊशी दासी दा ए दे. This is called common letter. This is called what? महमूद तली कल मकावा दा उसमा bold का दा मिसा का bold. फिजिक्स की कुदा से bold on the symbol राशि का ना आम letter न लग द्रुनवी आम letter न सवी ना हुई तो वे मंग vector हुई. This is not A. This is called vector A. This is called vector A. This is called common B. ये vector नहीं है. लेकिन अगर इसको हम bold कर ले, then this is called what? Vector B. This is called C, common letter. लेकिन अगर इसको हम bold कर ले, this is not C. This is a specific symbol which represent a vector C. को दासी नहीं लिखी, दासी वो लिखा. This is called common A. But this is called what? This is called vector A. This is called common B. But this is called vector B. This is called common C. But this is called vector C. And so on. खुदा physics के लिए use कीगी. The implication physics की निश्ता. Symbolically, vector is represented by bold letters. स्तासु किताब की दा निश्ता. स्तासु किताब के खुदा दी. Symbolically, vector is represented by a common letter with arrow draw a bow on it. Draw? बाज़ खलक वही चे arrow draw below it. दाम टिक दे. खुदा below स्तासु किताब की निश्ता. नो तासु दासी दा presentation जान सा point note कहीं खुदा दी implication निश्ता. किताब के बतासु दासी symbol भी नहीं ने. किताब के बता सो दा भी नहीं दा दासी बोली ही नहीं दा सजा है रही दा वेक्टर दे दा सजा है रही दा वेक्टर दे दोबारा पे एरो दा नो द्वेम नंबर आर दा वो सब लिखा आर a vector is represented
A vector is represented by common letter with a arrow draw a bow on it. A bow humshta or below humshta, below nishta application it which below it non tik the hodel the application nishta. Example basangishi shabas dit among so what is this? Common letter. What's the अब आपने arrow draw की है a bow on it. Now this is not a common letter, this is a vector A. This is a दामक से सोख दे B. दा सोख दे F. अब कुछ दास भी लिखम and so on. तो सिंबॉलिकली हम वेक्टर को तो या बोल्ड प्रेजेंट करेंगे और या कॉमन लेटर से प्रेजेंट करेंगे, लेकिन ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे? एरो. था सुनो सवाल ले शाबाश दे तमंग सवायु कॉमन एफ और दे तमंग सवायु बस दा मेन डिफरेंस इज द मेन फर्क दी बदे के ला दगलक बन कजुया Haji, sanga boy was graphically basanga dako. Graphically a vector is represented by a straight line. With arrow draw on its one side. Such that straight line represent the magnitude and arrowhead represent the direction. Like that's the suki vector which chita de jahaz speed malum ka ya the jahaz speed ma sara given de. Sumra de 500 किलोमीटर या माइल्स पर आवर दा पदी वाइट बोर्ड राजे का वो तो कदी बने खो 10 मीटर न राजेगी नो 500 किलोमीटर बसंग राजेश राजे बशी साजिद ना दा मंग अरेंज को दे पर मंग स्केल वाखलो दा बा आगे से मंग ड्रा को वेशु दा मंगा दा के पर तरीका दा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ग्राफिकली a vector is represented by a straight line, with the arrow head draw on its one side. Da masara your straight line de. Da straight line mata magnitude rakai 10 centimeter. Aw da arrowhead mata sara kai direction. Now arrowhead shows the direction and length of line shows the magnitude. No, da mang sara kam yo presentation de. Da graphical presentation de. Da sare graphical presentation. De da para ba dwa khabari mang ko. Yo ba scale akhlu aw yo ba direction lines draw ko. Direction lines आपके पास north, south, east and west. Now this is para yo example likama. How we represent a vector graphically? Your example uli ka deta para. Example. Damang sara yo jahaz rawan de. Aw the jahaz speed 500 kilometer per hour de. Aw the east direction tarawan de. Represent graphically. Represent on graph paper. Pasabandi
ग्राफ पेपर बांधे दा प्रेजेंट का सब रिप्रेजेंट कम दा दुमरा स्पीड और दा डायरेक्शन रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ पेपर या ग्राफिकली हम टिक दा ग्राफ पेपर दो सीजन बतासो अखले दा बजान सजदा कोई तासो कम दो सीजन दको फर्स्ट वन स्केल सर स्केल बवाखु ये तो मंग सूटेबल स्केल वायु मौजू स्केल अब या डायरेक्शन लाइंस ड्रॉ डायरेक्शन लाइंस खुतास तजददी नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट खजी 500 किलोमीटर सपोज 100 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 200 बल से बराबर शी और 300 बल से बराबर शी मैं सपोज करल 5 बल से बराबर शी 500 किलोमीटर पर आवर बदा 5 सेंटीमीटर बराबर शी यो लाइन बढ़ा के चिदा हगल लेंथ 5 सेंटीमीटर हुई सुमरवी सो 5 सेंटीमीटर इज एक्चुअली इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर और द डायरेक्शन कम हुई टुवर्ड ईस्ट so this length shows the magnitude of the vector quantity and this arrowhead shows the direction of that vector this is called what graphical representation दो चीजों ना याद साथी scale और सरा suitable scale और बल direction lines this is called what presentation of vector खजी तासु बहुसा the vector is a symbolical representation याद साथी A और the बराबर arrowhead B और the बराबर arrowhead उसमें small definitions the vector को some small definitions related with the vectors are कम small terms